Let's don't give the unnecessary due respect to latecomers. Dear students, Shabash, please pay your attention. Look here, bache. You are presently, you see what I am doing. I am holding a glass of water. Why? So ultimately, इस ग्लास को मैं उठा सकता हूं, लेकिन एक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ a serious patient lying on the deathbed is not capable enough to pick up the glass. Why it is so? He is also a human being. I am also a human being. I am capable to lift up this glass because I have the energy to pick it up. So therefore, there is one quantity what we call energy. Energy means ability to do work. Right? So one of the term we will use today is energy, which in our language we can say urja, energy. Then there is a work, fine. So let's first of all talk about the symbols involved. Why I am doing this article first of all? So that if others join late, they will not miss something important. Listen, bete, you will make the chart yourself. First of all, I am making the symbol. One symbol is for W, another symbol is E, another symbol is P, another symbol is F, another symbol is S, another symbol is T, right? Another symbol is V. These are the symbols which are being used in this unit. Out of these so many symbols, the symbols which I am encircling presently, these are most important. Okay, but you all should be familiar with their SI units and names, like W stands for work, E stands for energy, V stands for velocity, E stands for power, F stands for force. I am hoping that you are writing, because at this moment it seems easy chart, but later on you will find it quite useful. S is never the distance, it is always displacement. Displacement. And T stands for time. So far the teacher has written the concerned symbols involved to understand this unit. Let's proceed further. What is their internationally accepted unit? A unit. Systeme International. The unit which every country of the world has to accept helplessly. They have to accept it. Okay? Everybody please be attentive. Look, work and energy both have the same unit and they are represented by capital J, meaning joule. Sometimes you can pronounce it joule, joule or joule, whatever you like. Velocity as a unit is meter per second. Power as a unit is watt. W stands for watt. Force as a unit is capital L, represented by Newton. Displacement as a unit is meter. Time as a unit is small as second. One important thing I want to mention here is what, bete? When you have to write the name of the scientist Newton, name of the scientist,
then N should be capital. But here we are representing the unit Newton. When unit has to be mentioned, then first letter should be small. This is the convention adopted worldwide. Okay. Another thing, is there other units popular from these SI units? Yes, other units are also there. But while solving the numericals, so you have to put data in these units. Numerical data in the formula should be put in these units. But other units are also popular. Question arises, which are the other popular units for these symbols? Listen carefully. For work and energy, other units popular are, listen, ERG. One unit is ERG, ERG. Another unit is kilowatt hour. Look, once again I am telling, kilowatt hour. Another still important unit popular is calorie. These are the units of work and energy both. Okay? For energy as well as for work. Other units. For velocity, one unit popular is kilometer per hour. Another is centimeter per second. Got it? Another unit for power is kilowatt. And still another popular unit is HP, horsepower. Horsepower. Another unit popular for force is dying, dyne, dying. Still another unit for displacement popular is kilometer, centimeter. Other units of time popular is minute. And another unit is hour. These are the units which are popular for other physical quantities. Now question arises, when while solving the numericals we have to put only international units, and suppose in the numerical statement the data is given in some other units. How will we come from these units to international units? I mean, the conversion factors which are responsible, which are helpful for converting the units from one measuring system to the other. What are those conversion formulas which we should remember? We should learn by heart. रट्टा लगाना चाहिए. कौन कौन से यूनिट्स है बेटे, वो कौन कौन से कन्वर्जन फैक्टर्स हैं, मैं अगले पेज पे लिखूंगा. तो अभी तक मैंने क्या बताया आपको? Popular symbols, their names, international units, and other units. Correct? Apart from this, I am also mentioning here is their nature. Listen, I am mentioning now their nature. Nature means whether they are vector physical quantities or scalar. Is there any student in the class who can tell me what is meant by vector physical quantity? Shabash. Any student in any section. देखते हैं, कंपटीशन कराते हैं. Any student from any section. What is meant by vector physical quantity? Anybody? Nobody is raising the hand. Listen, bete. Some of the physical quantities have two features, direction as well as magnitude. But some of the physical quantities have only magnitude. So which is having only magnitude, those are scalar quantities. But which have both magnitude as well as direction, they are vector quantities. Let me clarify it with an example. For example, like I have this box, fine, and somebody is saying, sir, apply the force of 10 Newton. If he says 10 Newton force, so I have applied 10 Newton force. But in what direction?
Direction is also important. If I apply the force in this way, the box moves. If I apply the force in this way, box does not move. So in case of force, not only the magnitude is important, कि मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं, 10 न्यूटन, 8 न्यूटन, 5 न्यूटन, but at the same time, direction of application of the force is also important. So those physical quantities which require the importance of both direction as well as magnitude are called vector physical quantities. Or those which have only magnitude, those are scalar quantities. तो इसमें कभी आपने कंफ्यूज नहीं होना. लेट मी गिव यू मेमोरी टूल. गौर से देखो, वेक्टर के स्पेलिंग में वी से आपके दो एरोज निकलते हैं बेटे. देखो वी से एक ये वी और ये वेक्टर के बीच. तो याद रखना, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज दो हैं जिनके डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी. लेट मी टेल यू, वर्क इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. एनर्जी इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. velocity is a vector physical quantity. Power is a scalar physical quantity. Force is a vector physical quantity. Displacement is a vector physical quantity. Time is a scalar physical. So ये whatever the chart we have made, that is very important. अगर मेरे टीचर ने ये कराया होता क्लास में, तो मैंने इसका इमीडिएटली एक फोटो क्लिक कर लिया होता. तो जब आप YouTube पे मेरा लेक्चर जाके रिवाइज करोगे घर पे, तो इसका प्रिंट आउट लेकर ना, इसका क्लिक फोटो लेकर प्रिंट आउट ले लेना, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा. और बेटर क्लैरिटी के लिए मैं इसमें डिमार्केशन लाइंस लगा देता. ओके बेटे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तब हम इसको मेमोरी में डाल लेते हैं. सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फीडबैक लूंगा. इज देयर एनी सिंबल और एनीथिंग which you have not understood so far? शाबाश. कोई भी बच्चा मेरे को बताए, क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको इसमें समझ नहीं आई? और अगर वाकई आपको समझ आ गई, तो आपको टीचर को फीडबैक देना है पॉजिटिव. क्या कह रहा है टीचर? इफ यू हैव रियली अंडरस्टूड दिस चार्ट, प्लीज रेज योर राइट हैंड एंड गिव मी द फीडबैक. राइट हैंड खड़ा करके फीडबैक दो बच्चे. शाबाश. जिनको ये चार्ट समझ आ गया वो राइट हैंड तो खड़ा करो कम से कम. 9th A आई एम आस्किंग यू. बेटे एक छोटी छोटी बात को टीचर बार बार पूछे क्या? ओके, डाउन डाउन डाउन. शाबाश, मेरे को पता लग गया. अब कोई भी सेक्शन में कोई भी बच्चा जिसको ये नहीं समझ आया कुछ भी पार्ट इसका, वो लेफ्ट हैंड खड़ा करेगा विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी स्केयर in the mind, without scaring. Anybody who has some doubt in any of the symbols anywhere in this chart will raise the left hand. So what I am observing, students are listening the lecture very attentively. They have understood this chart. Okay, so मैं इसको मेमोरी में पुट कर लेता हूँ. टाइम बचा तो रिवाइज करेंगे, वरना आप YouTube पे जाकर देखना लेक्चर को दोबारा. Now the important thing, conversion factors between units. Everybody write down conversion factors between units. बेटे ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी चार्ट. ये सारी चीजें आपको टेबुलेटेड फॉर्म में किसी बुक में कहीं भी लिखी हुई नहीं मिलती. फिर आपको पेपर में आपसे न्यूमेरिकल नहीं होते. फिर क्या है बेटे? शाबाश. योर अटेंशन. समझदार बच्चा not only will listen in the class but try to learn, try to remember the conversion formulas on the spot. Number 1 kilometer, 1000 meter, 1 meter, 100 centimeter. Number 2, 1 kilometer per hour,
is equal to 5/80 meter per second. B, 1 joule is equal to 10 to power 7 erg. शाबाश. 1 न्यूटन is equal to 10 raised to power 5 डाइन. सभी बच्चे नोट करते जाएं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 1 कैलोरी 4.18 जूल. नोट कर रहे हैं बेटे? अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी. यही चार्ट अगर आपने पर्सनल लेवल पे इकट्ठा करना हो तो गूगल पे ढूंढते ढूंढते आपको 1 घंटा लग जाएगा. 1 घंटा इसकी कलेक्शन करने में. इसलिए सुस्ती मत करना बेटे. 6th point, 1 kilowatt hour of energy is equal to 3.6 into 10 raised to power 6 joule. Next, शाबाश. 1 horsepower 746 watt. 1 kilowatt 1000 watt. 1 hour 3600 second. 1 hour 60 minute. 1 minute, everybody knows 60 seconds. Next, your attention. Next, बेटे, 1 then is your 1 mile. 1 mile 1.61 kilometer. These are the conversion factors which are must to be remembered up to the class of level 9th. अगर मैं इससे ज्यादा लिखूंगा फिर वो 9th के लेवल से ऊपर चले जाएंगे. तो हमने सिलेबस के अंदर अंदर रहना है. 9th के लेवल तक आपको इतना आना चाहिए डायरेक्ट. अब एक छोटा सा मैं कन्वर्जन का एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं. मान लीजिए, योर अटेंशन, मैंने आपको बोला पावर ऑफ 3 किलोवाट. तो यू कैन नॉट पुट 3 इन द न्यूमेरिकल. यू हैव टू पुट 3 into 1 kilowatt. Later on, this is what the example. Okay. Later on, put the value of 1 kilowatt. 1 kilowatt is how many watt? SI unit is watt. 1000. So 1000 watt. So therefore, while putting the data in the numerical, I will put 3000 watt because the unit now becomes watt. SI unit. International unit of power is watt. This is how these conversion formulas are useful to convert the data given in non-SI units to convert the data in SI units. That is why you have to learn these things by heart. रट्टा लगाना होगा, प्योर क्रैमिंग. ओके. अब हम बढ़ते हैं आगे बच्चे. जिन बच्चों को यहां तक समझ आ गया, प्लीज रेज योर राइट हैंड. प्लीज रेज योर राइट हैंड. गिव द फीडबैक टू द टीचर. शाबाश. बहुत अच्छे मैनर्स हैं बच्चों को. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ये भी हम मेमोरी में पुट करते. ठीक है बेटे. अब हम चलते हैं कि आखिर ये क्या चीज है. ये क्या चीज है, इसके बारे में बहुत सारी बातें कर. आई हैव रिटन द वर्ड एनर्जी इन द सेंटर ऑफ द बोर्ड. ठीक है. इससे मैं बहुत सारे लर्निंग पॉइंट निकालूंगा ऐसे ऐसे कर. तो आपको ध्यान से देखने हैं टीचर कौन कौन से एरोज निकालते हैं. वेरी अटेंटिव.
one point will be interlinked to the other. ओके और घर में जाना, यूट्यूब पे इसको फोटो लेना, प्रिंट आउट लेना, फिर अच्छे से पढ़ना. नंबर वन, if I have to define what is meant by the energy, I mean definition, आप कहोगे सिंपल शब्दों में बोलो, काम करने की क्षमता. एनर्जी, एनर्जी इज व्हाट? कैपेसिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू वर्क. अगर किसी इंसान के पास ये नहीं होगी तो वो पानी का गिलास कैसे उठाएगा टेबल से? एनर्जी है, काम करने की क्षमता है, तभी हो पाए. तो एवरीबॉडी शुड राइट डाउन, एनर्जी इज व्हाट? कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू डू सम वर्क. कुछ ना कुछ काम करने की जो योग्यता है, दैट इज नोन एज व्हाट? एनर्जी. Do the energy has any direction? Sorry, energy does not have direction. It is have only magnitude. So you will say energy, it is a what? Scalar physical quantity. Scalar physical quantity क्या होता है बच्चे? जिसको मापा जा सके. Anything which is measurable is known as physical quantity. Scalar means no direction, only magnitude. Right? Let's move further. What is next? Energy can be of different types. It can be of many types. Like it can be potential energy, it can be kinetic energy, it can be nuclear energy, it can be sound energy, etc. etc. Okay? Many types. So यहाँ पर हमें अपने सिलेबस में जो मायने रखती है वो है ये दोनों. ओके? ये दोनों हमारे 9th की क्लास के सिलेबस के मुताबिक इंपॉर्टेंस रखते हैं. लेट्स टॉक अबाउट फर्दर 4th लर्निंग पॉइंट. व्हाट आर इट्स यूनिट्स? हम पहले ही बता चुके हैं, एक बार फिर से बता दें. यूनिट्स, SI यूनिट इज जूल, others are, joule is what? SI unit. Others are kilowatt hour. और क्या बताया टीचर ने? कैलोरी. और क्या बताया? अर्ग. देखो बेटे, मैं मिनिमम बता रहा हूं आपको, इसमें भी सुस्ती मत करना. अदरवाइज मैं अगर एनर्जी की सारी यूनिट्स लिखूं तो ये 10 यूनिट्स बन जाए, 10. तो मैं कम से कम लिख रहा हूं, ऐसा ना हो कि आप इसमें से भी कट लगा दो. नेक्स्ट पॉइंट. अब हमारे पास एक और आती है बात, आखिर काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटे? ये वो एनर्जी है जिसकी वजह से कोई बॉडी मोशन में आती है. राइट? फॉर एग्जांपल, ध्यान से देखना बेटे, मेरे हाथ में क्या है? एक ग्लास का सफियर है, और आपको अच्छे से पता है कि इस ग्लास के सफियर को अगर मैं किसी सरफेस पे रखूं, ये देखो रखा, और मैं इसको पुश करूंगा तो ये मोशन में आ जाए. राइट? राइट? ये देखो फिर से देखो. तो ये मोशन में कौन लेकर आया इसको? एक कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई ऊर्जा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. विच काइंड ऑफ एनर्जी इज इंपॉर्टेंट फॉर इट्स मोशन? ऐसी एनर्जी जिसके वजह से, जिसके गुण की वजह से इसमें मोशन आ गया, ये गतिशील होगी. दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. सो योर आंसर शुड बी kinetic energy is energy associated due to
motion of body, or you can say the energy responsible for motion, वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। अगली बात, मान लीजिए लर्निंग पॉइंट 6 पे बात करते हैं। अगर कोई बॉडी एम मास की, याद रहे बेटे, एम मास की बॉडी वी वेलोसिटी से मूव करे, वी वेलोसिटी के साथ मूव करती है, मूव, एम क्या करते हैं, मास, तब इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? तो रिमेंबर, उस केस में हमें इसकी एनर्जी होगी इतनी, हाफ, हाफ पुट करना है, मास और वेलोसिटी का स्क्वायर करना पड़ेगा बेटे। मास को जब भी पुट करेंगे जूल में पुट कर, किलोग्राम में पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को जब भी पुट करेंगे जूल में, and at the same time the unit, SI unit used for velocity is meter per second। velocity का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। देखो सारे क्लास आगे बेटे, व्हाट आई नोटेड कि आप सभी डी लिंक हो गए थे ड्यू टू weakening of the strength of the signal। only one section have joined so far। we are waiting for the other classes to join bete, we will reinitiate। for don't waste time, note down as quickly as you can। शाबाश बेटे, बहुत सारे चार्ट बन जाएंगे, 10 से भी ज्यादा पॉइंट बन जाएंगे, तो इसलिए डोंट वेस्ट टाइम, जो भी आपके लिए पॉइंट नए हैं नोट करो। फर्स्ट लर्निंग पॉइंट, सेकंड लर्निंग पॉइंट, थर्ड लर्निंग पॉइंट, फोर्थ लर्निंग पॉइंट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। शाबाश। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर काइनेटिक एनर्जी में यू सी द टीचर इज सेइंग बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी। लेकिन एक बात याद रहे, यहां पर जो बॉडी मूव करेगी ना बेटे, योर अटेंशन, वो बॉडी ऐसे मूव करेगी, ऐसे, देखो ध्यान से, ऐसे स्लाइड करते हुए या स्लिप करते हुए, ऐसे। ये उस केस में फार्मूला नहीं है अगर बॉडी आपकी रोल करे। देखो ये मेरे पास सफियर है, ये रोल कर रहा है किसी वेलोसिटी से, रोल करके अगर कोई बॉडी मूव करेगी तब ये फार्मूला गलत है। अगर कोई बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करे या स्लिप करे, देखो ये ऐसे, ये स्लाइड करी, स्लिप करी, तब ये फार्मूला सही है। तो यहां पर लिखना है मूव का ब्रैकेट में स्लाइड और स्लिप, इट शुड नॉट रोल। रोल के लिए ये फार्मूला गलत है, इसलिए मैं रोल लिख के कट करता हूं। रिमेंबर इट, दिस इज द प्रिकॉशन। नेक्स्ट लर्निंग पॉइंट, seventh learning point, there is another energy which is known as potential energy। potential energy, what is it बेटे? ये वो एनर्जी है जो किसी बॉडी को पर्टिकुलर प्लेसमेंट करने से मिलती है या उसकी नेचुरल शेप को चेंज करने से मिलती है।
So again, there was weakening of the strength of the signal. Let these technical glitches not to disturb us. शाबाश, आ जाओ हम इन दिक्कतों को खुद को परेशान ना होने दें, आगे बढ़े. So teacher is saying potential energy associated with the specific placement of the body with respect to reference level. कैसे बेटे? मान लीजिए ये ग्राउंड है, यहां से आई हैव प्लेस्ड सर्टन बॉल at a height of h such that ball mass is m. तो with respect to ground means reference level, मैंने उसको पर्टिकुलर लोकेशन दे दिया. आई हैव गिवन ए पर्टिकुलर पोजीशन टू द बॉडी. What kind of energy is associated? Potential. What is the formula? Mass into acceleration due to gravity into height. And everybody should note it that gravity value on Earth's surface is 9.8 meter per second square. So, bete, teacher has told put the mass in kilogram, height in meter, and acceleration due to gravity, small g value is already written below, 9.8 meter per second square. So you can put this. Why? This is what your potential energy. एक चीज आपने और नोट करी, what the teacher has written here. Teacher has written potential energy is also stored due to change in the natural shape of the body. नेचुरल शेप में चेंज लेकर आएंगे तब भी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी आएगी. लेट मी क्लैरिफाई इट विद एन एग्जांपल. सपोज बच्चे, आपके पास एक ऐसा स्प्रिंग है, स्प्रिंग, ओके, दिस इज योर स्प्रिंग, और इट इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम बोथ साइड्स, पुल्ड आउट. सो इसकी नेचुरल शेप को मैंने डिस्टर्ब करके ऐसा बना दिया. हाउ मच? तो व्हाट वी सी, मैंने इसको ऐसे स्ट्रेच कर दिया. तो आई हैव चेंज्ड द नेचुरल शेप ऑफ द स्प्रिंग टू द स्ट्रेच्ड शेप. So that means whatever the work I have done in stretching the spring, that will store into the spring as its potential energy. क्योंकि potential energy बॉडी की नेचुरल शेप को चेंज करने में भी स्टोर हो जाती है. तो कई बच्चों को सिर्फ यही पता होता है एनर्जी एसोसिएटेड विद द हाइट. नो, शेप की वजह से भी जो एनर्जी चेंज होती है, स्टोर होती है, शेप चेंज करने से, वो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है.
सिग्नल के द्वारा पता। करो फोन कर दिया। शाबाश बेटे, नथिंग टू वरी। जो आपका सिग्नल डाउन होने की वजह से हल्का सा डिस्टर्ब हुआ है, मैं उसको रिपीट करने लगा हूं। लेकिन एक दो क्लासें और ज्वाइन करने दो। अभी सिर्फ एक ही क्लास ने ज्वाइन करा बच्चे। बाय द टाइम यूटिलाइज इट। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो आपने नोट ना किया हो। शाबाश। खास तौर पे नाइन्थ एट्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ पॉइंट नोट कर लो जल्दी से। गर्ल्स आर नॉट नोटिंग डाउन। बेटे indirectly I am waiting for other sections to join. So far only one section have joined. लो बच्चे, आगे बढ़ते हैं बेटे। टीचर ने सेवंथ पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी हैज बीन कवर्ड। नाउ ही इज सेइंग दिस, ये पॉइंट एट्थ पॉइंट रिटन इन द व्हाइट कलर, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। Sometimes in the examination he asks you what is the total mechanical energy. So it is defined as kinetic energy plus potential energy. The sum total of kinetic and potential energy is known as total mechanical energy. आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, काइनेटिक के लिए ये करना पड़ेगा, और बाद में इन दोनों को ऐड करना होगा। Then only you will be able to write down potential energy.
और देखो लास्ट में क्या कह रहे हैं, आखिर ये बॉडी में एनर्जी आती कहां से है। किसी भी बॉडी के ऊपर जो हम वर्क करते हैं, द वर्क डन ऑन द बॉडी गेट्स डिपॉजिटेड इन द बॉडी एज बॉडीज एनर्जी। किसी भी बॉडी के ऊपर करा गया वर्क उसी की एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। जैसे इस स्प्रिंग को मैंने वर्क करके ऐसे स्ट्रेच कर दिया था, स्ट्रेच करा तो जो वर्क करा ना इसको स्ट्रेच करने में, दैट गेट्स स्टोर्ड इन इट्स एनर्जी। वो एनर्जी पोटेंशियल भी हो सकती है, काइनेटिक भी हो सकती है, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। वर्क डन ऑन द बॉडी गेट्स डिपॉजिटेड इन द बॉडी एज बॉडीज एनर्जी। तो इस तरह से टीचर ने आपको 9 लर्निंग पॉइंट्स कराए। कौन से आर्टिकल के? एनर्जी के। और अगर मैं इसके टोटल लर्निंग पॉइंट बताऊं आपको, एनर्जी के टोटल लर्निंग पॉइंट है 35। मैंने आपकी क्लास के हिसाब से कितने बताए? सिर्फ 9 लर्निंग पॉइंट बताया। ऐसा ना हो कि आपको 9 लर्निंग पॉइंट में भी कोई ना कोई भूल जाए। जिन बच्चों को ये समझ आ गया, प्लीज रेज योर राइट हैंड। प्लीज रेज योर राइट हैंड। फीडबैक चाहिए होता है बेटे, मैं जाना ही नहीं आगे। आप हाथ में खड़ा कर दीजिए, पड़ा मार कर बेटा, मैं यही बात बार बार पूछी जाओ। इफ यू हैव अंडरस्टूड गिव द टीचर फीडबैक बाय रेजिंग योर राइट हैंड। ओके, फिर से वही क्वेश्चन। इफ यू हैव अंडरस्टूड रेज योर राइट हैंड, गिव द फीडबैक टू द टीचर। थर्ड टाइम। ओके, फोर्थ टाइम। इफ यू हैव अंडरस्टूड इट, raise the right hand, give the feedback to the teacher. If some learning point is not clear, you can tell me the serial number of that. Okay, once more. If you have understood this, raise your right hand, give the feedback to the teacher. Yes, understood. Okay, fifth time. Okay, करते रहो, जितना मर्जी इंसल्ट कर लो टीचर की, मैंने ये पूछना ही पूछना। If you have understood it, you have to give the feedback to the teacher by raising your right hand. Okay, seventh time. If you have understood it, raise your right hand to give the feedback to the teacher so that I can proceed. Okay, okay, okay. अब फिर भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो टीचर के 8 बार पूछने के बाद भी हाथ नहीं खड़ा करा। अब मैं उल्टा पूछ रहा हूं, उनको कसम है जिन्होंने डायरेक्ट में नहीं हाथ खड़ा करा अंडरस्टैंडिंग में, और इनडायरेक्ट में नहीं, दोनों तरफ नहीं खड़ा करा, तो पेरेंट्स की कसम है। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट, रेज योर लेफ्ट हैंड। मैंने कसम दी आपको पेरेंट्स की, जो बच्चे दोनों तरफ हाथ ना खड़ा करे ऐसा कोई ना। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनी ऑफ द सिंगल पॉइंट, प्लीज रेज योर लेफ्ट हैंड। और माइक पर आकर उसका सीरियल नंबर बता दो मेरे को, तो मैं इसका क्विक समरी कर दूं। बेटे हमारा सिग्नल ड्रॉप हो गया था, फिर से सुन लो। इन द फर्स्ट लर्निंग पॉइंट टीचर सेज एनर्जी इज नथिंग बट एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी काम को करने की योग्यता को एनर्जी बोलते हैं। सेकंड, एनर्जी हैज मैग्नीट्यूड ओनली। एनर्जी हैज मैग्नीट्यूड, ओके, बट एनर्जी हैज नो डायरेक्शन। डायरेक्शन के ऊपर टीचर ने क्रॉस लगा दिया, सो दैट इज व्हाई एनर्जी इज कॉल्ड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट, एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हो सकती है। मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी। सबकी यूनिट, कोई भी टाइप हो, सबकी इंटरनेशनल यूनिट जूल ही होगी। ऐसा यूनिट ऑफ एनी काइंड ऑफ एनर्जी इज जूल। अदर यूनिट्स आर किलोवाट आवर, कैलोरी, अर्ग। टाइम इज ओवर। अच्छा बेटे, बस इसको फास्ट रिवाइज कर देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। एनर्जी, एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द बॉडी। ओके बेटे, और टीचर ने ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो लिखा, लेकिन इसमें एक प्रिकॉशन दिया है कि ये जो बॉडी का मोशन है ना, ये स्लाइड या स्लिप करके होना चाहिए।
रोलिंग नहीं होना चाहिए। अगर कोई बॉडी रोल करके मोशन करती है तो ये फार्मूला गलत है, दूसरा फार्मूला लगता है। वो दूसरा फार्मूला कौन सा है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट, एनर्जी एसोसिएटेड विद द पोजीशन, प्लेसमेंट, पोजीशन, तो वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। या एनर्जी ड्यू टू चेंज इन इट्स नेचुरल शेप, जैसे स्प्रिंग को स्ट्रेच करा था या कंप्रेस भी कर सकते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल होती है। और किसी भी बॉडी के ऊपर करा गया वर्क उस बॉडी में ही जमा हो जाता है जाकर, एज द एनर्जी ऑफ द बॉडी, वर्क डन ऑफ द बॉडी गेट्स स्टोर। ठीक है, तो मैं वाइंड अप करने से पहले अपने बच्चों को दिखाना चाहता हूं कि एक हमने ये सीखा, एक ये सीखा बेटे, और एक ये सीखा चार्ट। ये तीनों आपके लेक्चर यूट्यूब पे लोड कर दिए जाएंगे, आपको याद करने होंगे। अगले लेक्चर में हम पावर पे बात करेंगे, वर्क पे बात करेंगे, सारे केसेस करेंगे। आज हम इस पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।